morning, students. Today we'll discuss about vectors for cloning genes in plants and animals. So last we have discussed about the vectors, their cloning site and their selectable marker, origin of replication. Here PBR 322 we have discussed already, and we have already discussed in the antibiotic resistant gene we are using here. Two types we are using: ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene here. And here ORI means origin of replication also should be there. This is actually the, we can say, the E. coli cloning vector PBR 322, and P is for plasmid, B for Bolivar, and R for Rodriguez. Means these are actually the naming actually we are saying. And this is PBR 322 total. It is called, it is showing origin of replication, that already we have told you, origin of replication is there. And then sorry, they are showing some restriction site, just like the BAM-H1. BAM-H1 is restriction site is this one. These are restriction endonuclease. This is 1, HIND 3, SAL 1, PBU 3, 2. So these all are restriction endonuclease, and their restriction site is also shown here. Okay, means they can cut this much portion if you are using the BAM-H1. And again we are using the cloning sites, and the link marker we are using here, that is ampicillin resistance and tetracycline resistance. And suppose the alien DNA is introduced by BAM-H1, means we are using which one? The restriction endonuclease BAM-H1. So BAM-H1 cut this portion only, and definitely the DGR gene is introduced here. So here what is the linker, or the, we can say, the marker was present there, tetracycline resistant gene. तो अगर कोई इंट्रोड्यूस हुआ if any foreign DNA is introduced here, so at that condition tetracycline resistant gene will be removed, because BAM-H1 they have to cut it and then they have to join the foreign DNA. So when they are cutting this section, definitely tetracycline resistant gene who are present here, that will be removed. So that PBR 322 means the host which is containing this recombinant DNA, means after adding the foreign DNA, they cannot grow in tetracycline, we can say the media containing the tetracycline antibiotic, because bacteria is killed by the antibiotic. तो अगर आपने कुछ मीडिया लिए, और in that if we are saying about the media, some media we are taking, and in that media if we are taking, मान लो कि यहाँ पे आपने मीडिया प्रिपेयर किया बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए, एंड बैक्टीरिया में आपने ये प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. So that bacteria cannot grow if this media is having tetracycline, है ना, antibiotic. So but they can grow if the media is having ampicillin resistant gene, means ampicillin resistant, because ampicillin resistant gene is present. So if ampicillin is here, so in that media, if the media is containing ampicillin, so there the bacteria can grow. So who are growing in this ampicillin containing, they are actually called the transformed. Why it is transformed? Because they are getting this plasmid. Okay, but plasmid में वो recombinant हुआ कि नहीं, how we can understand that one? Because then you have to transfer it in a tetracycline resistant or tetracycline containing media. So they are, who are not growing, they are recombinant, and who are growing, they are non-recombinant. Recombinant means they are getting this DJR gene. ठीक है, तो this is actually the modified PBR 322. प्लाज्मिड को आपने मॉडिफाई किया, क्लोनिंग वेक्टर बनाया इसको. सो वेक्टर बनाने के लिए आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक चाहिए, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपको चाहिए, और सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए. क्लोनिंग साइट्स भी चाहिए और सिलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए. मार्कर के हिसाब से हम लोगों ने ampicillin or resistant gene or tetracycline resistant gene we have used here, and restriction sites so many are there. So what we can use, that is actually restricted. Suppose BAM-H1 you are using, so definitely they will cut this section and the foreign DNA will be joined here. If you are using the PST1, so they will cut this section and the foreign DNA can be joined here. So at the sense that they cannot grow in ampicillin containing media. This is the condition. So first of all we have to transfer दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग होस्ट. आफ्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद आपको कहाँ पे इसको शिफ्ट करना है ना, होस्ट कल्चर करनी है. होस्ट मीन्स एनी बैक्टीरिया में आप लोग उसको शिफ्ट करना है, एंड देन द बैक्टीरिया विल बी कल्चरिंग. जितना बैक्टीरिया कल्चर होगा उतना ही आपको ये
जो foreign DNA, that many copies we can get. So first of all, we have to shift in ampicillin containing a media, and if those who are surviving, they are already transformed, means they got this PBR 322. But PBR 322 is recombinant or not? How we can understand? That is called recombinant. मतलब उसमें वो ऐड हुआ कि नहीं है, तो PBR 322 ठीक है उसके पास है, लेकिन उसके पास ये एडेड हुआ कि नहीं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड? सो देन वी हैव टू शिफ्ट इन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया, दे आर इफ दे आर सर्वाइविंग, दैट मीन्स दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट, मीन्स इसके पास शिफ्ट हुआ ही नहीं. अगर शिफ्ट होते तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं रहते उधर, बिकॉज बैम H1 इज यूजिंग देयर, सो डेफिनेटली इट विल कट, और कट के साथ ये टेट्रासाइक्लिन भी रिमूव हो जाएगा. सो इन दिस प्रोसेस, this is a process to find out the recombinant and non-recombinant, transformant or not non-transformant. यहाँ पे all of you already have discussed these things last class. So we can we have to shift in two media. First one is ampicillin containing and then tetracycline containing. So best way is the chromogenic plate, means where we are using. Next one also you can see beta galactosidase, and this process is called insertional inactivation. What is the meaning of that? Now, due to insertion of the foreign DNA, this tetracycline resistant gene is not activating, means it is not become activated, it is not working. So that's what is called insertional inactivation. Insertion, due to insertion it will become inactivate. Okay, so then we are coming here ki insertional inactivation. So if we are beta galactosidase enzyme is there, so that is actually showing the color. So the media containing this means the bacteria who are producing the chromogenic substrate, that means they are having the beta galactosidase, that means their insertion hua hi nahi, there is no, that means those who are producing the color. Okay, just like this one here, you can just you understand that one, because here beta galactosidase is here and we are introducing any foreign DNA. So definitely beta galactosidase, just like tetracycline resistant, here we are using the beta galactosidase. So beta galactosidase will be removed. So definitely that recombinant plasmid cannot show any color, because beta galactosidase का जो criteria है, they can produce the color. So if the beta galactosidase is removed, definitely they will not produce any type of color. So those who are recombinant, those where the foreign DNA is included there, they will not produce any color. And those who are not recombinant, जिसमें ये include हुआ नहीं, they can produce the color. So we need only one media, and there we can prove that who are recombinant and who are non-recombinant. Okay, so in that sense, it is actually coming there. Because of the shifting is not present here, because ampicillin and then tetracycline is not working, so that's why we are using this beta galactosidase. This को हम लोग क्या बोलते हैं, chromogenic substance, and that is producing the blue color, है ना. So now this is actually another way to find out the recombinant and non-recombinant. There we have to take little bit initiation, and that's why only one media we have to use there. Now we are coming vectors for cloning genes in plants and animals. So vector तो आपने PBR 322 अपने आप कर ली, लेकिन उसको vector for the cloning genes in plants and animals, तो उसको कैसे उसको introduce किया जाए? So it is given here. So you may be surprised to know that we have learned the lesson for transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses, which have known this for ages. How to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want. For example, Agrobacterium tumefaciens. Okay, in case of plant, we are using the Agrobacterium tumefaciens. In case of the animal, we are using the cancerous cells. How it is, we are just using that one. So a pathogen of several dicot plant is able to deliver a piece of DNA known as the tDNA. क्या नाम है उसका? Tumefaciens a tumor producing कर रहे, that's why it is called tDNA, to transform the normal plant cells into tumor. Okay, so now we are coming and direct this tumor cell to produce the chemicals required by the pathogens.
Okay, so similarly, retrovirus is an animals have the ability to transform the normal cell into cancerous cells. So in case of animal, we are using the retrovirus. In case of plant, we are using the Agrobacterium tumefaciens. Okay, now we're coming a better understanding of the art of delivering genes by pathogens is their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans. How it is? The tumor inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic, जिसके पास और pathogenic effect नहीं है to the plants but is still able to use the mechanism to deliver genes for our interest into the variety of plants. Means इसके पास pathogenic effect नहीं है but they can convert the normal cells to the tumors. So many copies of the required gene we can get there. है ना, is able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants. How it is happening, look at here. So here we are using this is TI plasmid, this one is TI plasmid, है ना. तो यहाँ पे this one the red portion is actually that tDNA means tumor introducing DNA. ठीक है, and this one is the restriction site. Suppose this is the foreign DNA you have to introduced, है ना. This is a desired DNA, है ना, we need in the plant. आपको plant में ये DNA चाहिए और आप कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हो ना, टीआई प्लास्मिड को आप यूज कर रहे हो. व्हाई? बिकॉज दे कैन कन्वर्ट द नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल बट विदाउट देयर पैथोजेनिक इफेक्ट. तो ये टी डीएनए जो है ट्यूमर डीएनए प्रोड्यूसिंग जो पार्ट है टी डीएनए दैट विल बी रिमूव्ड ओके बाय दिस रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जो यूज करोगे दैट शुड बी यूज्ड फॉर दिस वेक्टर एज वेल एज द फॉरेन डीएनए ऑल्सो. जिसको आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो उसको और वेक्टर दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको कट करनी है. तो डेफिनेटली सेम पार्ट में उसका काट होगा, जैसे स्टिकी एंड हम लोगों ने पढ़ा था, है ना. तो दोनों के पोर्शन ऐसा होगा कि दे कैन जॉइन विथ ईच अदर. ऐसे रेस्ट्रिक्शन साइड से आप काट करोगे तो दिस फर्स्ट स्टेप दिस इज द इंसर्शन ऑफ जीन इनटू प्लाज्मिड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज. सो वी आर यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर बोथ and DNA ligase for joining the cut part into here. तो now this is called recombinant TI plasmid, है ना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TI plasmid. और TI plasmid के TDNA हम लोगों ने दिखा दिया रेड पोर्शन को काट करके आपने कौन सा पोर्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है ना, ग्रीन पोर्शन, दैट इज द फॉरेन डीएनए. तो नाउ दैट डीएनए दिस TI plasmid is carrying the foreign DNA what we need. Now this TI plasmid is introducing where? इंट्रोड्यूसिंग इन द प्लांट सेल. अपने प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर. देखो प्लांट सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है उसकी पार्ट क्या है, पिंक पार्ट, और उसमें आपने ये पोर्शन को इंट्रोड्यूस कराया, है ना. कौन सा पोर्शन को इंट्रोड्यूस कराया ना, दिस पोर्शन व्हिच वी नीड. जब भी इसको आपने इंट्रोडक्शन कराया है तो दैट डीएनए दिस टीआई प्लाज्मिड की जो रिकॉम्बिनेंट पार्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड है. सो टी डीएनए कैरिंग न्यू जीन विद इन द प्लांट क्रोमोजोम. तो टी डीएनए के पास जो न्यू जीन था कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया ना, प्लांट डीएनए में इंट्रोड्यूस हो गया. नाउ दिस इज द रीजनरेशन इज गोइंग ऑन एंड द प्लांट व्हिच इज नाउ कमिंग दैट इज विद द न्यू डिजायर्ड जीन. क्योंकि प्लांट सेल में आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दी. इतना प्लांट सेल जितना डिवाइड करेगा उतना ही न्यू जनरेशन होगा, रीजनरेशन होगा प्लांट की. तो जब प्लांट की रीजनरेशन होगा ईच सेल इज कंटेनिंग दिस रिक्वायर्ड जीन दैट वी नीड. तो मान लो आपको किसी का टॉक्सिन प्रोडक्शन करना है किसी इंसेक्ट को मारने के लिए, जैसे बीटी कॉटन वाला हम लोग बोलते हैं बैसिलस thuringiensis. तो ये वो भी हम पढ़ेंगे. तो उसमें क्या होता है कि दिस plants are getting this toxin there, so that when the plants leaves are eaten by that insect, so definitely that toxin is going to the gut and the insect will die. So that is called actually the modified plant or genetically modified plant. Okay, so this is the condition by which first we are target DNA as well as we have to select one plasmid which can introduce which can introduce where in the plant cell. So that's why we are using the TI plasmid here. तो TI plasmid के उसी पोर्शन दोनों के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काट कराया एंड देन इसको इंट्रोड्यूस कराया एंड देन दैट vector this is vector the recombinant TI plasmid that is introduced in the plant cell.
सो दैट प्लांट सेल इज नाउ, प्लांट सेल की क्रोमोजोम के अंदर ये इंट्रोडक्शन हो गया और दैट इज इंक्लूडेड हो गया, एंड नाउ दे आर रिपीटिंग देमसेल्व्स एंड नाउ द न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस विद द रेस्ट्रिक्शन, और यू कैन से द डिजायर्ड जीन, जो जीन चाहिए दैट इज विद द प्लांट नाउ. This is for the plant. In case of animal, what is happening? The animal, we are using the retrovirus. The retrovirus की जो RNA that is introduced into the we can say the animal body, but animal body के introduce होने के बाद the animal की body की जो cell की जो machinery that will be occupied by the virus, क्योंकि ये तो खुद के कोई machinery होता ही नहीं है. So by with the help of this viral RNA, so RNA is now by reverse transcriptase enzyme, है ना. रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ चुके हो, तो इसमें डीएनए से आरएनए होता है, और जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में ऑलरेडी यू हैव लर्नड. तो इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज व्हाट इज हैपनिंग, now this RNA is actually converted into DNA and that is called RNA DNA hybrid. ओके, सो नाउ दिस RNA DNA हाइब्रिड से DNA डबल बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं. दैट DNA डबल बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस्ड वेयर इन द सेल मशीनरी. सेल की जो न्यूक्लियस के अंदर जो उसकी क्रोमोजोम है, क्रोमोजोमल DNA में इंट्रोड्यूस हो चुका है. एंड नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग व्हिच वन, नाउ ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स दे आर फॉर्मिंग द RNA देयर, एंड दैट RNA इज प्रोड्यूसिंग अगेन वायरल genome, means RNA genome for the new viral genetical material is producing here. Here their outside capsomeres are also produced, and then they both are coming outside and they are producing the virus here. So now this is called, means what actually we need, that we are actually introducing here, and then we are getting the, we are introducing that desired gene in where, in the animal cell. That is called, that's why it is called the animal vector. So in the animal vector we are using the retrovirus, and in case of plant we are using the Agrobacterium tumefaciens, that is called the TI plasmid. This is plant vector and this one is animal vector. Clear now? So what we need, that we can get here by introducing the viral DNA into the chromosomal DNA. Chromosomal DNA में आपने introduce करा दिया, तो ये जितना we can say the they are replicating, so definitely they are getting the more and more that desired gene. So that desired gene will be introduced here by the help of which one, the retrovirus. Okay, so this is about today how the vectors are actually cloning genes in the plants and animals. And now we are coming competent host for transformational recombinant DNA. जैसे competent host means जैसे कि आपने recombinant DNA बनाए, but you have to transfer into a host. तो होस्ट में तो डायरेक्टली आप डीएनए को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो उसका कुछ प्रोसीजर है. व्हाट इज द प्रोसीजर? सो सिंस डीएनए इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, मीन्स वाटर लविंग, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. व्हाई? बिकॉज सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड होता है. तो लिपिड क्या है, तो वाटर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो हाइड्रोफोबिक होने के कारण दे कैन नॉट अलाउ द डीएनए टू गेट एंट्री. सो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लास्मिड, सो बैक्टीरिया जिसको आप कल्चर करा रहे हो उसके अंदर आप ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को अंदर कराओगे तो जाके इसका आपके कॉपीज मिलेगा, है ना, तो आपको डिजायर्ड जीन मिलेगा. बट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द प्लास्मिड इनसाइड द बैक्टीरिया. हाउ इट इज पॉसिबल? द बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट हैव टू कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए, मतलब उसको तैयार करना पड़ता है डीएनए को लेने के लिए. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटन. सो सेल वी हैव टू ट्रीट इट बाय व्हिच वन, कैल्शियम या डाइवेलेंट कैटन्स उसको ट्रीट करना है पहले, व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विथ व्हिच द डीएनए enters the bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius, and this को heat shock बोलते हैं, and then putting them back on ice. So what we are doing actually, we are first treating the bacteria with the divalent cation just like the calcium. तो उसके लिए क्या होता है कि pores की थोड़ा सा competency बढ़ जाते हैं, तो the bacterium through pores in the cell wall, तो DNA की जो introduction वो बढ़ जाते हैं. इसके बाद जो recombinant DNA and the we can say the incubating the cells, मतलब recombinant DNA then force into such cell by incubating the cells with recombinant DNA. incubate करते हैं किसको ना, जिस सेल में आप recombinant DNA को एंटर करना चाह रहे हो, मीन्स बैक्टीरिया, and with the recombinant DNA in a ice, followed by placing the briefly at 42 degrees Celsius and then putting them back on ice. पहले आइस में देना है, फिर 42 डिग्री सेल्सियस में देना है, फिर आइस में बैक करना है. तो दिस enables the bacterium to take up the recombinant DNA. ये है
how to make the cell competent to the recombinant DNA. पहले recombinant DNA हाइड्रोफोबिक है, सॉरी हाइड्रोफिलिक है, they cannot pass through the cell membrane, and therefore we need to make the host cell competent. host cell के हिसाब से हम कौन सा यूज़ करते हैं, बैक्टीरियम competent बाई कीपिंग दैट इन ए डाई कैल्शियम की जो सॉल्यूशन में रखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको आप इंक्यूबेट करना पड़ता है विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए with ice, then 42 degree Celsius, again coming back to ice, so then the DNA can introduce. तो ये एक process है. Other so many processes are there by which also we can introduce the recombinant DNA into the host cell. How it is? Now micro injection. Recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. तो न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल में डायरेक्टली आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन. इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, सेल्स आर बोम्बार्ड विथ, सेकंड मेथड, बोम्बार्ड विथ हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ द डीएनए इन अ मेथड नोन एज द बायोलिस्टिक और जीन गन. मतलब आप उसको बोम्बार्ड कर सकते हो विद द हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, एंड उसमें उसी गोल्ड एंड टंगस्टन में आप उसी डीएनए को कोटेड करके रखोगे और उसको आप बोम्बार्ड करोगे, तो डेफिनेटली ये बायोलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें जीन इंट्रोड्यूस हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन इंट्रोड्यूस. And the last method is the disarmed pathogen vector, which when allowed to infect the cell transfer. मतलब आपने पैथोजन वेक्टर्स जो है, पैथोजन को ही आपने यूज़ किया बट उसको डिसआर्म कर दिया, मतलब उसको पैथोजेनिक जो प्रॉपर्टी उसको किल कर दी, तो उसको आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली which जब ये पैथोजन इन्फेक्ट करेगा या अटैक करेगा सेल को, सो डेफिनेटली दे कैन ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. सो ऑलरेडी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेक द सेल कॉम्पिटेंट, एंड देन 3 processes are there to introduce the recombinant DNA. One is micro injection, and there is ballistic method, and there is the disarmed pathogen method. Okay, up to this today. Then next day we will learn about the processes of recombinant DNA technology.